हाय अरम, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप बताएं क्या मसरूफियात हैं आजकल। यार आजकल आई थिंक जो बस सालों से मसरूफियात चल रही हैं, we're just trying to sort of build technology to make a difference. पहले was a lot of connect here, now it's a lot of farmers helping them getting access to credit. Just the same sort of focus in a different domain. मुझे ये जानना था कि आपने एक साल हाई स्कूल के लिए आप अमेरिका गए थे, तो उसके बारे में हमें जरा बताएं वो किस तरह का एक्सपीरियंस था एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिली। तो बेसिकली वो वाला ना एक प्रोग्राम था कॉल्ड द यस प्रोग्राम ना। उसका यस का फुल फॉर्म इज यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी। तो उसका प्राइमरी आइडिया इज कि आप पाकिस्तान से जाते हो जब आप 9th 10th ग्रेड से फारिग हो जाते हो। तो दे सेंड यू टू यूएस फॉर अ होल ईयर आफ्टर लुकिंग एट योर ग्रेड्स, आफ्टर लुकिंग एट योर स्पोकन इंग्लिश, योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, योर लिसनिंग स्किल्स, एंड आफ्टर सीइंग हु यू आर एज अ पर्सन एंड वेदर अगर आप पैशनेट हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, फिर आपको यूएस भेजते हैं। यूएस में जो है आप सारी फैंसी जगह नहीं जाते हो, मतलब आप जो है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और इन 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 मखसूस जगहों पे जो हम टीवी शोज में देखते हैं, आप उधर बिल्कुल नहीं जाते हैं। यू एक्चुअली गो टू सब अर्बन एरियाज ना, जो मतलब रूरल एरियाज और अर्बन मेजर सिटी सेंटर्स के बिल्कुल बीच का एरिया होता है। और आप उधर जाते हो, उधर होस्ट फैमिली के साथ रहते हो, वहाँ अंडरस्टैंड करते हो टिपिकल अमेरिकन लाइफ क्या होती है। आप हाई स्कूल में जाते हो, वहां पे पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काम कैसे करता है, उनकी स्पोर्ट्स को करिकुलर्स, वॉलंटियर वर्क, ये सारी चीजें ना आप बहुत फिर इनकलकेट हो जाते हो इन चीजों में ना, आप इनको सीखते हो, समझते हो, और आपको उससे अंदाजा होता है कि अच्छा यार यहाँ लाइफ कैसी है। और यस प्रोग्राम का एक मेजर पॉइंट जो है वो ये है दिखाना कि यूएस के अंदर कम्युनिटी सर्विस और वॉलंटियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से सोसाइटीज को हेल्प करता है। तो वहां जाकर मैंने बहुत इस चीज को सीखा कि जैसे पाकिस्तान में मैं था तो मेरा ख्वाब जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने का था वो ये था कि मैं एनजीओ बनाऊंगा, बहुत सारे पैसे जमा करूंगा और उन पैसों से ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। वहां जाके मुझे कॉन्सेप्ट का अंदाजा हुआ कि मेरा टाइम और मेरी स्किल्स आर मच मोर वैल्यूएबल देन एनी मनी, एनी अमाउंट ऑफ पैसा दैट आई कैन रेज। तो आई थिंक दैट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं मैसाचुसेट्स का एक स्मॉल सा टाउन था कॉल्ड ऑरेंज, जो कि बॉस्टन, जो कि हमें बड़ा सबको आई एम श्योर अंदाजा है, बॉस्टन से कुछ लाइक 70-80 मील दूर था। तो उस टाउन में मैं रहा था, सिर्फ 7,000 लोग थे। 50% ऑफ द पॉपुलेशन ओवर देयर वाज एक्चुअली अबव द एज ऑफ 60। तो वहां पर बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हुआ करते थे जिनको कम्युनिटी सर्विस या वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती थी। तो आई रियली लर्नड अ लॉट कि वहां मैं अपनी स्किल्स और अपने टाइम से भी कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो अब अगर किसी को अप्लाई करना है, सो आई रियली सजेस्ट कि दे गो लुक अप आई अर्न पाकिस्तान, सो इट्स IEARN, और फिर पाकिस्तान। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर यस प्रोग्राम को लीड करती है। उनकी डायरेक्टर है फरा कमाल। शी इज बिन अ मॉन्यूमेंटल पर्सन इन माई लाइफ, obviously giving me this opportunity to represent Pakistan at a global stage in the US। और फिर अब ये है कि आप कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो वो दे कैन सर्च ऑनलाइन, दे कैन अप्लाई डायरेक्टली, दे कैन ऑल्सो टॉक टू देयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको भी वो बोल सकते हैं कि उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन सेंड कर दें। सो इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, फिर आप एप्लीकेशन भेजते हो, इंटरव्यूज होते हैं। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और अगर कोई थोड़ा सा भी कंसिडर कर रहा है ना इसको, तो दे शुड एब्सोल्युटली गो फॉर इट। अरम, आपने एक चीज रियलाइज की है कि यूएस में एजुकेशन को एक काफी होलिस्टिक लेंस से देखा जाता है। पाकिस्तान में समझा जाता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप 6 से 8 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, होमवर्क मिल रहा है आपको, आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करा रहे हैं, 2-3 महीने बाद आपके वो बाई मंथली हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। कोई ना वॉलंटियरिंग एक्टिविटी आपकी हो पा रही है। स्पोर्ट्स पे भी अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है, बट उसका पहले वो भी नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है, इवन एट एन अंडरग्रेड लेवल एंड इवन एट द हाई स्कूल लेवल, वो पाकिस्तान से इस लिहाज में किस तरह से मुख्तलिफ है, नॉट जस्ट फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव बट फ्रॉम एन बियॉन्ड द क्लासरूम वाला परस्पेक्टिव। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट ये बहुत एक मेजर एस्पेक्ट है जो मैं खुद पर्सनली जब वहां गया था और एक अमेरिकन हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो आई थिंक आई रियलाइज राइट अवे ना इंस्टेंटली कि पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ द रिगर इज कि यार बस बच्चे को ना बुक स्मार्ट किसी तरह बना दो। बेशक उसका इंटरेस्ट कुछ और हो, राइट। बेशक ये हो सकता है कि एक बच्चा, आप उसको जो जिन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए फोर्स करे सीखने के लिए, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, दे आर प्रॉब्ली मोर स्पोर्टी, मोर एडवेंचरस, और मे बी दे
उनको जो है कॉमर्स वाली चीजें पसंद है। यहाँ पे तो कॉमर्स ऐसे होता है कि अगर आप साइंस नहीं करो तो ओ माय गॉड कॉमर्स करो, दैट्स सो हॉरिबल। वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक साल में मैंने वहां पे कैलकुलस के भी कोर्सेज लिए, मैंने अकाउंटिंग के भी कोर्सेज लिए, मैंने क्रिएटिव राइटिंग के भी कोर्सेज लिए। एंड इन ऑल ऑनेस्टी वो एक क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स, और वहां जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, मिस्टर बियॉन्ड नाम था उनका, उन्होंने जिस तरीके से मुझे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, या जो है कमिंग अप विद लाइक न्यू थिंग्स, वो उन्होंने जिस तरीके से मुझे सिखाया है, वो सिर्फ मैं राइटिंग के प्रोसेस में नहीं, अब जब every time we're brainstorming कि अच्छा यार how do we run a marketing campaign for connect here, या how do we try to get the messaging out of what we're trying to do in a certain way, जब हम brainstorm कर रहे होते हैं या we're trying to figure out कि अच्छा यार अब हमें हमारी ऐप के अंदर क्या improvement करनी है, क्या नया फीचर लाना है, तो उसकी brainstorming is actually done from something I learned in a writing का context. So I think यहाँ पर we're very focused and very rigid कि यार अच्छा follow this path down to a T ना। आप स्कूल जाओ, आप कॉलेज जाओ, आप बैचलर्स करो, मास्टर्स करो, फिर जॉब करो, एंड दैट्स योर लाइफ। और हमेशा ए ग्रेड लाओ, टॉप ग्रेड्स लाओ, और जो है सिर्फ सिर्फ वही जो बेसिक चीज है ना, साइंस की चीजें, इंजीनियरिंग की चीजें, सिर्फ वो पढ़ते रहो। यूएस के अंदर दे गिव एवरीवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर हु दे आर। एंड देन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम वाला पॉइंट दैट यू मेंशन इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आई रिमेंबर एज अ किड एंड आई सी माई यंगर सिस्टर्स बेसिकली गोइंग थ्रू द सेम sort of cycle के बच्चा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है बिकॉज इट इज सो एकेडमिकली रिगरस, दे रियली डोंट हैव द एनर्जी कि वो कुछ और कर भी सकें। मैं बताता हूँ मेरा यूएस के अंदर दिन कैसा होता था। सुबह आई रिमेंबर आई वुड वेक अप एट 6:30 AM, विच वाज नॉट समथिंग आई हैव एवर डन इन पाकिस्तान एज अ स्टूडेंट, राइट। वो उठ के पहले मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हमारी प्री क्लासेस लाइक दिन, स्कूल का दिन स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग होती थी फुटबॉल की ना। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा हमने ट्रेनिंग की, फिर ब्रेकफास्ट वहीं पे ही सर्व होता था कैफेटेरिया में, तो वी वुड हैव ब्रेकफास्ट, क्लासेस करते थे, लंच करते थे, फिर क्लासेस और होती थी, और फिर दोबारा 3 घंटे की ट्रेनिंग। फिर उस ट्रेनिंग में या तो हम लोग ड्रिल्स कर रहे होते थे, या जो हमारा कोई मैच होता था। फिर उस ट्रेनिंग या मैच के बाद हम लोग जाते थे वॉलंटियर वर्क करने, वो भी 1-2 घंटा होता था। और फिर जब मैं फाइनली 8 बजे 9 बजे घर पहुंचता था, तो मुझे सिर्फ अपना होमवर्क करना होता था, एंड देन आई वुड बी एबल टू डू एनीथिंग आई वांट। And it was so weird that while I would have a lot more disposable time when I was here in Pakistan, I never found the energy, the drive, the infrastructure, or even the people to support me in doing that. Wahan, I was busy from like 6 a.m. to 8 p.m., right? And मुझे फिर भी लगता था कि ओ माय गॉड यार मैंने 24 घंटे में इतना ज्यादा काम कैसे कर लिया। सो आई थिंक ये चीज है कि not allowing the kids to change up the context, और अगर उनको आप opportunity ना दो to explore new areas and even focus on things that they're passionate about, I think that really limits their ability to do their best. अरम, आपने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की हैं। एक तो आपने मेंशन किया जो क्रिएटिव राइटिंग वाला कोर्स था, वो उसने बहुत ज्यादा आपको फायदा दिया है आपकी इवन आज तक। डू यू थिंक अमेरिकन्स आर जनरली ग्रेट स्टोरी टेलर्स? एंड I say this because you see the biggest companies in the world. You see Apple, you see Microsoft. इनके जितने भी CEOs हैं, they are the best storytellers, right? At the end of the day, Yeah. Apple एक ब्रांड है, right? एंड उस ब्रांड की जो स्टोरी टेलिंग है उसको उन्होंने इतना मास्टर कर लिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर वो एक तरीके से टेक ओवर कर चुके हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने आपकी स्टोरी से समझी है वो ये कि आप एक तो अपनी नॉन साइंसेस इंटरेस्ट को भी परस्यू कर सकते हैं, और उसके अलावा इवन इफ यू आर परस्यूइंग साइंस, आपको उस साइंस को भी देखने का एक नया लेंस मिल जाता है अगर आप एक क्रिएटिव राइटिंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। सो बिकॉज आई हैव सीन के आइंस्टाइन यूज्ड टू प्ले वायलिन फॉर एग्जांपल, वो उस तरह की जो स्टोरीज हम Yeah. लोग सुनते हैं, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। Agreed 100%। I think इसमें जो मुझे आई डोंट नो, मैंने इंटरनेट पे रैंडमली ये चीज कहीं देखी थी, तो मतलब आई डोंट नो हु टू एट्रीब्यूट दिस टू, बट इट वाज द पॉइंट कि इनोवेशन इज नथिंग लाइक कि मतलब यार आप कोई नई चीज इजाद कर रहे हो, रादर इट इज जस्ट the ability to connect two very distinct, different and unrelated ideas and making something new out of them। और वो चीज आप कब कर सकते हो? अगर आप 24/7 फिजिक्स 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 पढ़े जा रहे हो, या केमिस्ट्री केमिस्ट्री, या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो you don't have the sort of broader context of the things around you, the things across the world, जिनको आप कनेक्ट करके नई चीजें क्रिएट कर सकते हो। कनेक्ट हेयर एज अ बिजनेस मॉडल is innovative not because के we came up with something so radical and so new कि मतलब दुनिया में किसी ने कभी सोचा नहीं था, but it was a culmination of very distinct and different parts।
welfare करना है हमें for deaf individuals, but we also want a business that is for profit, continually keeps growing, and does not rely on any sort of donations and funding cycles and all of those things. So bringing all of that together was what was innovative, not the fact कि यार हमने ये किया तो दुनिया में पहली दफा है, तो it's like the first time anyone has ever done any aspect of it. So I think I agree 100% के non-sciences are also really important, right? Because अगर आप नहीं समझ पाते हो कि how do, for example, humans interact with each other, how do we perceive ourselves personally, how can you sort of as a software engineer build better products अगर आपको समझ ही नहीं आता आपका यूजर करता क्या है. Connect here is as a, even as a product, even as an application that we have, it is one of its kind only because we considered the human element. हम लोगों ने जो है ये नहीं किया कि अच्छा यार just have four software engineers sit down and code up a video calling system. We sat down with deaf people first, understood what their problems were, empathized with them, and tried to understand where are they coming from. पाकिस्तान में ये मसले हैं, यूएस में कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इंडिया में कैसे सॉल्व हो रहे हैं, पोर्चुगल में कैसे सॉल्व हो रहे हैं. But then instead of copying it, we're like, अच्छा ठीक है, localize करते हैं इसको, and then try to see how we can solve it in our own way. And that's where I think innovation sort of lies, the ability to marry very distinct and different ideas जो शुरू में नहीं लगते कि connect हो सकते हैं. But then at the end of the day, when you do that, फिर that's where sort of true innovation comes from. So I agree. Very interesting. Aram, one thing that I did pick from one of the conversations that I had with Azima recently is कि आप लोगों ने AI को भी इन्वॉल्व किया है इस पूरे प्रोसेस में, जो आप लोग डेफ इंडिविजुअल्स को हेल्प करना चाहते हैं. इसमें AI का किस तरह से रोल आया और किस तरह से वो प्लग इन हुआ है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. So अच्छा, it's an interesting story. और इधर I think I really want to preface this with the fact कि the story is about the fact कि हम हर जगह पे AI सुन रहे होते हैं, and it can become very easy कि हर चीज में जो है ना बंदा बस AI घुसा दे just so you know they can capitalize on the buzzworthiness that this word has. But for us, it was a very humbling moment क्योंकि जब हम लोगों ने ConnectHear start किया था, the grand vision was कि यार we want an AI model हो जो कैमरा आप सामने रख दो, वो साइन लैंग्वेज पूरी रिकग्नाइज कर ले और बोल भी दे कि डेफ बंदा क्या कह रहा है, एंड द अदर वे अराउंड एज वेल, कि आप कुछ बोलो और वो जो है ऑटोमेटिकली 3D एवेटार बना दे. All of this sounds really fun, all of this sounds really sort of forward looking and futuristic, but the issue is no deaf person would ever use it. And that was where we sort of realized that yaar, ye nahi ki hum AI karte rahe and we build a solution that doesn't even end up helping the people we want to help. So for us, this was the first thing, again, human centricity and empathy. The second thing was it was an open research problem जो किसी ने across the world नहीं की थी. आप और मैं यार लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहे होते हैं कि ओ फलाना इंजीनियरिंग स्टूडेंट डिड दिस, उन लोगों ने एक मॉडल बनाया है जो जी आपके अल्फाबेट्स A B C रिकग्नाइज कर रहा है, इस तरीके की चीजें. या जो आपको वो MIT के ग्लव वाली हर हर ना 6 महीने बाद वो रिफ्रेश होके ना मुझे लोग टैग कर रहे होते हैं, अजीमा को टैग कर रहे होते हैं कि ओ दे क्रिएटेड दिस ग्लव दैट कैन रिकग्नाइज साइन लैंग्वेज. बट नन ऑफ दोज एक्चुअली कम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विल अ डेफ पर्सन एवर यूज इट. अगर आप यही चीजें किसी डेफ बंदे को भेजो ना, दे विल एब्सोल्युटली हेट द फैक्ट कि आप बोल रहे हो कि उनकी लैंग्वेज जो है दैट यूजेस देयर फेशियल एक्सप्रेशन, देयर बॉडी मूवमेंट्स एंड देयर हैंड जेस्चर्स, you're reducing that to a single hand saying something. That's just not correct, right? So for us, when we were like, yeah, hame AI utilize karni hai, it was not ke, oh, we wanted to solve for this problem of sign language interpretation, but rather how do we scale the impact we want to make through AI. And I think uske baad it was a constant effort of 4 years on my end personally of researching and developing a computer vision model जो आपके phone पे चल सके, laptops पे चल सके, because it's also very easy to build models that perform really well unlike the most latest hardware, right? But Pakistan में किसी के पास वो latest hardware नहीं है, especially the community that's been marginalized for so long. So I think for us, there was a lot of this to consider. So then we came down to a fact, acha, we do want to build a system that can recognize sign language, but we're actually not going to use it to interpret what a deaf person is saying. Why? Because you need that human element. It is very tempting to say like कि AI इंसानों को replace कर देगी, you know, jobless हो जाएंगे लोग. But our interpreters is what makes us who we are, because we provide that human element, that human connection. So a deaf person doesn't feel like यार उसकी communication को भी हमने sideline करके एक computer program के through a process कर रहे हैं हम लोग. So we ended up developing the model. The model works really well. It is a global breakthrough. And that sort of also landed as partnerships with Google and NVIDIA. And we're looking forward on capitalizing them even further. But the model that we now have recognizes
साइन लैंग्वेज के वर्ड्स ना विद मूवमेंट, कि अगर मैं थैंक यू बोलूं या मैं बोलूं सिस्टर, सो यू नो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? या अगर ब्रदर भी मैं बोलूं, सो लाइक यू सॉ सिस्टर एंड ब्रदर के बहुत सिमिलर थे. हाउ डू यू बिल्ड अ मॉडल दैट number one recognizes these words individually and then is also not confused between these words, especially when they have similar signs? So the system we have now recognizes those words in real time. Or usko we're not using to interpret. We're actually developing a product that can help other hearing individuals learn sign language and get automated feedback in real time. उससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि हम जो साइन लैंग्वेज कोर्सेज हम लोग हर समर करा रहे होते हैं, हर विंटर करा रहे होते हैं, वी ऑफर प्राइवेट क्लासेस एज वेल, वो जो है अब हम स्केलेबली कर सकते हैं. एंड जो सिस्टम हमने बनाया है दैट इज सो यूनिक इन अ वे वेयर उसके जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना, कि आपको यार 1 टेराबाइट ऑफ लाइक वीडियो डेटा सेट चाहिए, उसको आप हफ्तों हफ्तों तक मशीन लर्निंग मॉडल को रन कर रहे हो, ट्रेनिंग लूप को रन कर रहे हो, ओनली टू गेट इट टू कि अच्छा अब ये सही चल रहा है, बट मैं थोड़ी सी भी जो अपनी इनपुट की कंडीशंस है वो चेंज कर दूं एंड देन द मॉडल इज यूजलेस. सो our model is actually so special in a way where it doesn't rely on anything what's in the frame, but rather holistically वो human body को capture कर रहा है और उसको utilize कर रहा है. And then through that we're able to actually train a model with as little as 3 training examples per word, which is a huge sort of quick iterative cycle for us, which is why we're now not just focused on Pakistani sign language, but also American sign language, international sign language, and we're able to do that very quickly compared to like traditional ML-based startups or even like sign language tutors. So I think the AI wali cheese was a really humbling moment for us because it did teach us a lot about कि क्या perspective आपको रखना चाहिए when you're actually trying to solve a problem, और हर चीज में ML और AI का buzzword घुसा देना is certainly not necessary. एक चीज आपने रियलाइज की है कि आइडिएशन करना तो काफी आसान है, राइट? अब मैं भी ये चीज आइडिया बना लूं कि मैं ये कंप्यूटर विजन मॉडल बना रहा हूं, बट आपने उस चीज को एग्जीक्यूट भी किया. एंड एग्जीक्यूशन के लिए काफी जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होती है टीम आपकी. एंड आपने कनेक्ट हियर में एक टेक्निकल टीम को भी लीड किया. एक तो आपको फाउंडर वैसे ही थे और ऊपर से आपने टेक्निकल साइड को भी देखा, एंड यू आर डूइंग समथिंग सिमिलर फॉर डी ग्लोबल टू. सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, how do you make sure that you are building a highly efficient technical team, be it as a CTO, be it as a technical co-founder, be it as just a data products and AI वाली team का member? How do you make sure कि आपकी टीम में हमेशा वो efficiency बरकरार रहे and वो mission driven रहे? I think इसके अंदर the last sort of point you added कि mission driven रहे. I think one thing we realized over time, especially at Connect Here, was the fact कि we do not care कि आप किस background से आ रहे हो या आपका क्या skill set है. Like in all honesty, right? You come here, you will find people who are college dropouts. You will find people who are university dropouts. You will find people जिन लोगों ने BCom किया हुआ है. You will find people जिन लोगों ने double masters किया हुआ है. And all of them sit together in that same room working towards the same mission. So one of the key things we realized कि यार, you know, qualifications aside, what we really want to see is a passion to actually work for the cause. I Yeah. would just like to add एक चीज. I think people Mhm. generally in Pakistan overestimate the cost that is required to train the resources. Yeah, absolutely, absolutely. So, this I agree 100%. For us at Connected, that's one of the sort of major costs for us because training an interpreter is roughly a 1.5 to 2 year long journey. And we don't charge the interpreters that we've trained. Instead, we cover the costs and then we provide them a full-time opportunity to actually be able to help deaf individuals in their daily communication needs. तो उसके अंदर यही है कि all of that only comes because the founders were mission driven. The founders had a passion for a very specific problem, right? It wasn't like we were like, yeah, we're just going to, I don't know, cure deafness across the world by 2030, right? But it was not something arbitrary or very North Star kind of like that. It was very specific. कि यार, we want कि पाकिस्तान के अंदर a majority of deaf individuals have the tool available to them where they don't have to rely constantly on their friends, on their siblings, on their parents, on their kids. So you know, वो वाली जो reliance थी हमें वो खत्म करनी थी, and we were really happy when we sort of also established a team कि मतलब सब लोग हमारे पास आए. शुरू में वही लोग आते थे जिन लोगों की फैमिली में डेफ लोग होते थे, जिनके पेरेंट्स डेफ हैं, जिनके सिबलिंग्स डेफ हैं, जिनके बच्चे डेफ हैं. Because you'll see that we have a wide variety of age ranges that connect here as well. We have like young enthusiastic children जो अभी university से graduate हुए हैं, right up to like people with complete families, you know. So all of them came together for a mission because they knew deaf individuals. But अब we see कि 5-6 years down the road,
we've sort of established enough awareness इस मुल्क के अंदर कि people come to us जिनका कोई link nahi hai with deaf families, right? Or they want to make a difference and they join our interpretation workforce. And Alhamdulillah, I'm honestly so proud to see that, like, literally, I think over the last sort of intake we had of interpreters, which was roughly 4 or 5 interpreters more, none of them had a background related to deaf individuals. All of them were passionate about the fact that, yaar, we really want to help deaf people communicate, but they never understood their pain, they never saw their pain, and they were not personally affected by it. So it just goes to show कि मतलब अगर आप एक sort of awareness create करते हैं and you give an enabling environment where everyone is sort of driven for a cause, so people also tend to get attracted to it. So I think that was a really good thing for us too. आपको लगता है कि रिसोर्सेज की कभी भी कमी हुई है फ्रॉम द टेक्निकल साइड, फॉर एग्जांपल कि किसी जीपीयू की जरूरत हो एंड वो बहुत एक्सपेंसिव हो, या फिर कोई मॉडल ट्रेन करना हो, तो उसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से रिसोर्स एफिशिएंट बनाया जाता है अपनी टीम को, उसके बारे में हमें बताएं. I think that's a good point. I think दोनों तरीके से in terms of like having technical talent on staff as well as having hardware. As a startup and especially as a bootstrapped startup, we were not funded. We have never raised any sort of round or anything. We Azima and I started from scratch. Like we didn't have any money to us. We didn't put in any of investment on our end because उसमें कुछ डालने को भी नहीं था. It was just our time. So initially tech का यही था कि मैं personal level पे देख रहा होता था. So if you can't hire a team, you just try to do it yourself. So obviously it was that on my part, and the second thing was कि जो मैं time और effort लगा रहा था, a lot of it actually went into developing computer vision models on compute constrained devices, which ended up being something I also focused on academically at my university for the last 2 years. I was there at Habib. और उसमें फिर यही था कि we realized कि यार पाकिस्तान के अंदर the expectation that even businesses, let alone individuals, have access to hardware जिस पे अच्छे AI models चल सकें is just unreasonable. आप किसी बिजनेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार आप 8-10 लाख का जो है एक जीपीयू लाओ ताकि एक जो मॉडल है ना हमारा वो 60 FPS या 30 FPS पे प्रिडिक्शन आपको दे दे. So a lot of my work and time actually went into developing systems and developing pipelines जिसमें आप कंप्यूटर विजन मॉडल्स को एफिशिएंटली रन कर सकते हो. और उधर यही था कि we just did not have a team, तो I cannot talk about कि हम लोग human resource efficient कितना थे, but I would like to acknowledge the fact that the people we did have were so driven to the cause and so connected to the cause and so driven for the mission कि वो खुद ही अपना time effort इतना लगा लेते थे कि we never had to sort of be like कि यार how can we be more efficient, you know. So I honestly cannot take any credit of me doing anything in terms of increasing efficiency. तो वो यहाँ के लोग खुद ही जो है sort of enable that for us. FIP प्रोजेक्ट, उसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, आपने बात की है कि किस तरह जो टेक्निकल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर अगर आपके पास ना भी हो तब भी आप किस तरह से अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं. The FIP we had was called Zamin, or Zamin, I believe means कि someone who takes responsibility for something and all ना. And the whole idea was कि हमें एक video analytics system बनाना था जो real time function करे. हमने बहुत सारे security cameras और ये security platforms देखे हैं जो बोलते हैं जी हम video record कर लेंगे और archive में जो है ना हम objects recognize और tag करके कर लेंगे, तो जब कुछ हो जाएगा ना तो उसके बाद आप उसको search कर सकते हैं. But real time you can't really keep an eye on these things, right? So we realized कि और क्योंकि FIP start करने से 1-1.5 साल पहले a lot of my sort of courses that I took, I particularly researched in the space of model optimization ना कि अगर मेरे पास एक machine learning model है, how do I make sure it runs not on GPUs but on CPUs. Now अच्छा ठीक है CPUs पे चल रहा है, but like Core i9 पे या Core i7 पे मैं अगर कर रहा हूँ वो भी 10th 11th generation at that time, so how do I make sure कि ये core i3 5th generation पे चल रहा है, you know, like stuff like that. So we were constantly constraining ourselves to make sure how far can we take this कि the model gives us reasonable enough performance. I'm not saying कि मतलब मैं 60 FPS पे चला रहा था model को, gives us reasonable enough performance where you can actually make better decisions about the things around you. So it was a very interesting problem for us to solve. So Zamin ended up being this platform that you could utilize for two major things. The first was obviously security based things कि आप
जो हो, एक सिक्योरिटी रूम में 3 लोगों को बिठा के बोलो यार ये जो 50 कैमरे हैं ना, इन पे नजर रखो एट एवरी सिंगल टाइम एंड डू नॉट मिस अ सिक्योरिटी इवेंट. But what if they do, right? They are human. So you obviously need a like AI assisted tool. I'm not saying कि मतलब this replaces humans completely, but rather augments it. कि अच्छा कोई event हो रहा है कि अच्छा यार एयरपोर्ट के अंदर आपने एक एरिया में एक बैग जो है काफी देर से पड़ा हुआ है, so वो that's a trigger, right? So it gives out a notification like this. Second is के loitering. Loitering is something we had to track people's faces, then we had to track them across cameras, and if we saw them in a particular area, we could also flag that right away. So this was security purpose, right? फिर secondly उसके अंदर license plate recognition और वो वाली सारी चीजें थी. So this was one thing. The other very interesting sort of use case we came about was helping one of the malls over here in Karachi to understand कि उनका footfall across the mall कितना है, right? And why that was helpful was that because now they had data to back up their sort of footfall kitni ho rahi hai ya kaun se areas are hotspots, they could actually dynamically charge prices for advertising placements over there. So that was something jab un logon ko we discussed, unka matlab honestly mind blown wala reaction tha, and they didn't even hide it from us. So I think wo was a really exciting problem, right? Because it was something they didn't think of before, but on our end, this was something that was really possible, that would really enable good business use cases. So it was a really interesting project. I think to the extent that we took it to was good enough, especially when we had like just 1 year to do it and a team of like, I believe 5 individuals, like including myself. So we developed that whole platform. We demoed it across various companies. We actually talked to a bank to deploy it for their internal security purposes as well. क्योंकि उसके अंदर you could also allow access control कि अच्छा यार ये फलाना सर्वर रूम है, इसके अंदर 6 बजे के बाद जो है only these 3 people X can come in, right? And अगर कोई और आता है, so you can instantly flag that. Because the security guard isn't constantly going to remember या अगर नया guard आ जाता है आप क्या करोगे, you know? So this was an interesting problem to solve. So it just unlocked a lot of use cases. It didn't end up becoming the sort of large scale product market fit wala product that I really wanted it to be, because obviously the team I had, they had their own priorities. They wanted to go do amazing things, that some are engineers, some are data scientists, some are machine learning sort of trainers and all of that. So वो जो हुआ था, that was really fun. I learned a lot, and then I actually translated that knowledge into the model that we built for ConnectHear, and I continue to sort of take that using machine learning for accessibility and better insights to D-Global as well. So yeah. Thank you for sharing that, Arhum. I'm glad to hear कि even at a local university आपका project आप इस depth तक लेकर जा सकते हैं. Yeah. तो मुझे जरा ये बताएं कि हबीब यूनिवर्सिटी के environment ने आपके mindset को कितना impact किया? Because I've seen a lot of, because I even graduated from high school recently, तो उनके marketing के ads भी आते रहते हैं. योहसन philosophy के बारे में वो लोग काफी बात करते हैं. Yeah. How has that impacted your mindset in the way of looking at problems? Absolutely. So I think this sort of brings me back to the point I was initially making about the YES program as well. Okay, when you give students or like young people the opportunity to be exposed to different perspectives, perspectives in the sense कि वो domain वाले जो perspectives है ना कि यार everything is not science, 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 technology, 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 but it's also human, it's also social, it's also art, it's also creativity. So I think Habib really does that well. कि as a computer science student, I had to take a lot of liberal arts courses. उसमें जो है कुछ में बात हो रही है modernity की, कुछ में बात हो रही है Pakistan and how it came to be and the politics surrounding all of that. Then there was a talk about religion. Then there was courses about sustainability and how do you sort of incorporate that into your products, into your services, into your offerings as a business or as an individual. So इस तरीके की जो चीजें थी, that really allowed me to think about things from a much broader scope, right? If I were just a typical software engineer, जिसने typical एक software engineering course या एक software engineering degree ले ली, जिसमें मैंने पढ़ी ही सिर्फ computer science और programming और data structures and algorithms, if that is all I studied, I would not be able to think from a broader perspective about अच्छा यार मैं problem किसके लिए solve कर रहा हूँ, क्या should I seek out feedback from them, how should I build a feedback loop, design thinking क्या होती है, empathy क्या होती है, all of these sort of things were only unlocked for me when I was exposed to experiences both at YES and both at Habib. So I think in that regards, Habib does a really, really sort of wonderful job, and I'm
really sort of grateful for the opportunity that they gave me, which was their HU Tops scholarship, which is again 100% scholarship for people who get through their selection process. So again, if people are interested in CS, that is slightly unconventional and does end up having a different sort of end up giving you a different perspective. So I think people should really consider it. आजकल जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं, पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन जो चल रही है, एंड जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स चल रहे हैं हमारे मुल्क के, यू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग आउट फॉर एजुकेशन, जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली। देखें इसके जो है ना, इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका फायदा ये कि वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं और आपका एक पाकिस्तानी डायस्पोरा बन जाता है वहां पे। बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो सी all of these Pakistani startups, companies hungry for good quality talent. So, what would you advise to the young talent that we have in Pakistan कि उन्हें क्या करना चाहिए इस टफ सिचुएशन में? मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था हैरी स्टेबिंग्स की, जो कि 20BC के फाउंडर हैं। उन्होंने मुदस्सिर शेखा को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, एंड वो भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक डिफरेंट मार्केट है। डिफरेंट इस लिहाज से कि यहाँ पे काफी सारे लोग दूसरे को सक्सीड होते हुए नहीं देख सकते, एंड यू दे फील लाइक कि अगर उसने सक्सीड किया तो उसने जरूर कोई गलत काम किया होगा, अगर इसने पैसा कमा लिया जरूर इसने करप्शन की होगी। ऑब्वियसली काफी सारे ऐसे लोग हैं, बट आप ये स्टीरियोटाइप Yeah, एक है ना, है स्टिग्मा है एक, तो yeah, एक सोशल absolutely. फैब्रिक भी इससे हमारा बड़ा इफेक्ट हुआ पड़ा है। तो इवन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है। तो आपकी क्या एडवाइस होगी इस यंग टैलेंट के लिए, उनको किस तरह से डायरेक्शन मिल सकती है? So I think the point I completely agree, but unfortunately I also understand that there is a level of desperation in all of us, right, to make something of ourselves. क्योंकि बचपन से ही वो हमारे अंदर डाला हुआ है, right, कि anything that our parents were not able to do, we're supposed to do. जब हम बड़े हो जाएंगे तो we're supposed to take more responsibility of our parents, of our own children, of our partners and all of those sort of things. So I think उस pressure के अंदर आके ना we sort of tend to make these not unideal decisions in life के यार, because we're just so desperate about कि यार हमें भी फटाफट जो है ना कुछ at least we find a way out, not just like out of Pakistan, but like out of the sort of current issues that we have, like you mentioned कि macroeconomic condition इतनी बुरी है। उसमें unfortunate reality ये है कि I understand it. The only sort of thing is कि you just have to find a cause that you're passionate about. Like I know दुनिया के हर issues आप नहीं resolve कर सकते हो, but if you pick that one thing and actually get going at it, this is my promise to you कि you will make an impact that the world will remember. मुझे जैसे this is a cause I'm passionate about, using technology for social development particularly, and then helping Pakistan unlock the sort of value of AI by making it accessible to people who do not have the lakho crore ka hardware that people across the world in developed nations have. So and then again, it's not like I don't face a lot of problems in other aspects of my life. Just today, driving, in Karachi is so horrible that I actually, my car crashed into like a bus and all, and like now it's actually in the repair shop and all of that, and the bus driver just ran away. So matlab, it is frustrating, right? Matlab, day to day basis पे चीजें होती हैं, and you constantly think about कि यार matlab, is any of this going to change? And I understand where everyone else is coming from. The only sort of thing that keeps me going is like yaar, at the end of the day I can sleep well knowing कि when there was a person in Punjab who got wrongly jailed as a deaf person because the police thought he was drunk and could not understand him. The next morning, it was our app and our interpreters that helped him get out. It's about the story of a deaf kid calling us, telling us to call an ambulance because his mother was sick and she fainted. It's these sort of stories that keep you going. और वही वाली बात है कि अगर आप अपने लिए एक प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको सॉल्व करने की मेहनत करोगे, so there is nothing in the world that sort of makes you feel jaded कि यार अब मतलब क्या जिंदगी है, आपको उसकी जो पैशन और उसका ड्राइव होता है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आई थिंक दैट रियली कैरीज यू वेल. सो आई जस्ट रियली वांट पीपल टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन स्मॉल थिंग इन देयर लाइफ, जो एक चीज उनको बॉदर करती है. रोड पे कचरा है, आप उसके बारे में कुछ देख लो. लोग ट्रैफिक लॉज नहीं फॉलो करें, स्टार्ट विद योरसेल्फ एंड देन एजुकेट अदर पीपल इन योर फैमिली, विद योर कजन्स, विद योर फ्रेंड्स. ऐसी छोटी छोटी चीजें.
अगर आपको लग रहा है कि यार लोग बहुत बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रहे, take up the initiative of educating people of opportunities that exist within Pakistan, the potential that exists within Pakistan, because there is a lot. The only thing is कि we're just so jaded, we can't see beyond the immediate कि यार अभी के अभी हमें कुछ चाहिए. Just one thing that I would like to add, जो कि मैं जनरली स्टूडेंट्स को कहता भी हूँ कि दो चीजें हैं. एक तो पहली बात, बी ऑब्सेसिव, राइट. जो भी आप काम करना चाहते हैं, मेक श्योर कि यू आर दी बेस्ट. एंड ये बेस्ट आप किस तरह से Absolutely. होते हैं, वो मुझे ले जाता है मेरे दूसरे पॉइंट पे. वो ये कि मेक श्योर कि यू डेवलप द राइट नेटवर्क इन फोकस्ड स्फीयर्स. तो फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करें सोशल इम्पैक्ट की यूजिंग टेक्नोलॉजी, सो देर आर नेटवर्क्स लाइक कोड फॉर पाकिस्तान जो कि सिविक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें. सो मेक श्योर यू गेट इनटू दोस नेटवर्क्स, मेक योर कनेक्शंस, एंड Yeah. उनके साथ मिलकर काम करें. आपस में एंगेज करें, डायलॉग करें उनके साथ, उनसे बात करें, एंड मेक श्योर कि वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, आप किस तरह से उनके कामों में वैल्यू ऐड कर सकते हैं. सो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर. And in the end, Aram, I would like to thank you. I know there's a lot to unpack there, and we'll make sure that we have this conversation sometime around again. And Absolutely. yeah, thank you very much for taking out the time for this one. Yeah, of Thank course. you. Thank Of you. course. Thank you. This was really fun. I really want to do it again.